नमस्कार दोस्तों, मेरे डूअर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो चैप्टर का नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें से सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस हम आगे की डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि ये सारे टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक से सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल करके यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो आप इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका ऑटोमेटिक सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पढ़ लिए गएंगे तो आपका टॉपिक वो पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Which of the following organ is innervated only by parasympathetic nerve? Option A, iris muscles. Option B, ciliary muscles. Option C, sweat glands. And option D, splenic capsule. Which option is correct? सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उसमें से ही सारे क्वेश्चंस को निकाले गए हैं दोस्तों यहाँ। तो ये छटे हुए क्वेश्चंस है, इन्हें आप अच्छे से देखिएगा। जीपैट का अब रिज़ल्ट आने में ज़्यादा देर नहीं है दोस्तों। तो रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत हरी हो जाएगा, समय बहुत कम रह जाएगा। इसीलिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जिन लोगों का हो जाएगा जीपैट पे उन लोगों को तो करना ही है, और जिन लोगों का अगर नहीं भी होता है उन लोगों को भी पढ़ना है, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम तो वो लोग कराएंगे ही। तो वो सारे एग्ज़ाम्स में यहीं से क्वेश्चन उठा के देंगे। तो आप तैयारी करते रहें। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सिलियरी मसल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सिलियरी मसल। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम exert functionally opposite influences on the following parameters except option A heart rate, option B arterial refractory period, option C pupil diameter, option D intestinal motility. Option D intestinal motility. तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी इंटेस्टिनल मोटिलिटी। इंटेस्टिनल मोटिलिटी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। टेट्रोडॉक्सिन ब्लॉक्स नर्व इम्पल्सेस और जंक्शनल ट्रांसमिशन बाय ऑप्शन ए एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, ऑप्शन बी डिप्लीटिंग एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन बी सी ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, ऑप्शन डी ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल। विच इज़ द ट्रू आंसर? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए दोस्तों, सही आपके अपने में गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स। ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स। दूसरा देख लेते हैं। द co-transmitter may serve the following function or functions. Option A regulate the release of the primary transmitter from the nerve ending. Option B alter postjunctional action of the primary transmitter. Option C itself act as an alternative transmitter. Option D all the above.
ऑल द एबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। नेक्स्ट, द फॉलोइंग co-transmitter is most probably involved in mediating nonadergenic non-cholinergic relaxation of the gut. Option A, neuropeptide Y in bracket NPY. Option B, adenosine. Option C, nitric oxide NO. Option D, calidine. Option D, calidine. इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजर पोस्ट जंक्शनल कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज ऑफ द मुस्कैरिनिक टाइप एट द फॉलोइंग साइट। ऑप्शन ए, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। ऑप्शन बी, एड्रिनल मेडुला। ऑप्शन सी, ऑटोनोमिक गैंग्लिया। ऑप्शन डी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कौन सा इसमें से मेजर पोस्ट जंक्शनल कोलिनर्जिक रिसेप्टर है? इसमें बताइए दोस्तों। तो इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। ऑप्शन ए, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। ऑप्शन ए। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Pseudocholinesterase differs from true cholinesterase is that option A, it does not hydrolyze acetylcholine. Option B, it hydrolyzes acetylcholine at a slower rate. Option C, it is more susceptible to inhibition by Pseudocholinesterase. Option D, it is the only form of circulating cholinesterase. Pseudocholinesterase differs from true cholinesterase is that option A, it does not hydrolyze acetylcholine. Option B, it hydrolyzes acetylcholine at a slower rate. Or option C, it is more susceptible to inhibition by Pseudocholinesterase. Option D, it is the only form of circulating cholinesterase. तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, इट हाइड्रोलाइसिस एसिटाइलकोलिन एट अ स्लोअर रेट। ऑप्शन बी, इट हाइड्रोलाइसिस एसिटाइलकोलिन एट अ स्लोअर रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The cholinesterase resistance to both true and pseudocholinesterase is option A, methacholine. Option B, bethanyl. Option C, benzoycholine.
ऑप्शन डी ब्यूटाइल कोलिन। तो इसका सही ऑप्शन है बेथेनेकोल, ऑप्शन बी। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। मुस्कैरेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ऑप्शन ए आर लोकेटेड ओनली ऑन पैरासिम्पैथेटिकली इन्वर्टेड एफेक्टर सेल्स, ऑप्शन बी mediate responses by operating an intrinsic sodium ion channel, option C are present on vascular endothelium which has no cholinergic nerve supply, option D predominant in the autonomic ganglia, predominant in the autonomic ganglia। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी आर प्रेजेंट ऑन वस्कुलर एंडोथेलियम विच हैज़ नो कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई, विच हैज़ नो कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कार्डियक मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, ऑप्शन ए are of the M1 subtype, option B are of the M2 subtype, option C are selectively blocked by pyridostigmine, option D functions through the PIP2, IP3 or DAG pathway। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आर ऑफ द M2 सब टाइप, आर ऑफ द M2 सब टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलिनर्जिक मुस्कैरिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग इफेक्ट्स एक्सेप्ट, ऑप्शन ए स्वेटिंग, ऑप्शन बी राइज इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी यूरिनेशन, which accept। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राइज इन ब्लड प्रेशर, राइज इन ब्लड प्रेशर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मूथ मसल स्ट्रक्चर दैट इज रिलैक्स्ड बाय कोलिनर्जिक ड्रग इज, ऑप्शन ए कोलोन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक फंडस, ऑप्शन सी मेजर ब्रोंकाई, ऑप्शन सी डी ब्लैडर ट्राइगोन। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जो स्मूथ मसल करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग देने के बाद, मसल्स को स्मूथ कर देते हैं एंड रिलैक्स्ड कर देते हैं। The smooth muscle structure that is relaxed by cholinergic drug is, option D bladder trigon, bladder trigon। Which of the following secretions is not stimulated by acetylcholine? Which of the following secretions is not stimulated by acetylcholine? Option A tear, option B bile, option C pancreatic juice,
ऑप्शन डी स्वेट, विच इज़ नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइलकोलिन। कौन इसमें से एसिटाइलकोलिन से स्टिमुलेट नहीं होता? ऑप्शन बी बाइल, बाइल इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। एसिटाइलकोलिन हैज़ नो थेराप्यूटिक एप्लीकेशन बिकॉज ऑप्शन ए none of its actions are beneficial in any condition. Option B, its effects are transient. Option C, it produces widespread actions affecting many organs. Option D, both B and C are correct. So option D is right, both B and C are correct. दोनों B और C ऑप्शंस आपके सही हैं इस क्वेश्चंस के तरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पिलोकार्पाइन इज यूज्ड फॉर, पिलोकार्पाइन इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए ग्लाउकोमा, ऑप्शन बी पैरालिटिक इलियस, ऑप्शन सी यूरिनरी रिटेंशन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। पाइलोकार्पाइन किसके लिए यूज होता है? ग्लाउकोमा के लिए, पैरालिटिक इलियस के लिए, यूरिनरी रिटेंशन के लिए, या फिर सभी के लिए? ग्लाउकोमा के लिए पिलोकार्पाइन इज यूज्ड, ऑप्शन ए ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्शन ऑफ पिलोकार्पाइन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्शन ऑफ पिलोकार्पाइन इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन ए स्वेटिंग, ऑप्शन बी सैलाइवेशन, ऑप्शन सी म्यूसिस, ऑप्शन डी साइक्लोप्लेजिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी साइक्लोप्लेजिया, साइक्लोप्लेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग इनहिबिटर बाइंड्स ओनली टू द एनियोनिक साइट ऑफ द cholinesteras एंजाइम, ऑप्शन ए neostigmine, ऑप्शन बी physostigmine, ऑप्शन सी edrophonium, ऑप्शन डी डाइफ्लोज, ऑप्शन डी डाइफ्लोज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एंड्रोफोनियम, एंड्रोफोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिएक्टिवेशन ऑफ cholinesteras enzyme occurs on hydrolysis of the inhibitor by the same enzyme molecule in case of the following anticholinesterase, option A edrophonium, option B neostigmine, option D diflose, and option D tacrine, option D tacrine, option C diflose।
दोस्तों सारे क्वेश्चन आप यहीं सही से देख के यहीं याद करते चलें, आप एक्स्ट्रा टाइम ये सब चीज़ों में ना दें। क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप यहीं पढ़ के कंप्लीट कर लेने की कोशिश करें दोस्तों, ताकि आप बाकी के समय में आप बाकी का क्वेश्चंस देख पाओ, तो आपके ये सारे तैयारियाँ जल्दी से सही समय से हो जाएंगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंटीकोलिनेस्ट्रेस एक्शन ऑफ edrophonium is short lasting because termination of its action depends on option A, dissociation and diffusion of the drug from the enzyme, option B, hydrolysis of the drug by the enzyme, option C, synthesis of fresh enzyme molecules, option D, a combination of the above three processes. A combination of the above three processes. तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डिसोसिएशन एंड डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द एंजाइम। डिसोसिएशन एंड डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द एंजाइम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द organophosphates produce irreversible inhibition of cholinesterase because option A, they bind to an allosteric site of the enzyme resulting in unfavorable conformation of stereotic site to bind acetylcholine, option B, regeneration time of the phosphorylated enzyme is longer than the turnover time of the enzyme molecules, option C, phosphorylated results in rapid degradation of enzyme molecules, option D, they are neither metabolized nor excreted from the body. Which options? तो इसका सही ऑप्शन आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रीजेनरेशन टाइम ऑफ द phosphorylated enzyme is longer than the turnover time of the enzyme's molecule, option B। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ 2 anticholinesterase drug X is a tertiary amine while drug Y is a quaternary ammonium compound, then option A, drug X is likely to be more potent than Y, option B,
drug X will be more suitable to be used as a miotic. Option C, drug Y will be completely metabolized in the body. Option D, drug Y will produce central nervous system effects. इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, ड्रग एक्स विल बी मोर सुटेबल टू बी यूज्ड एज अ मायोटिक. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, neostigmine is preferred over physostigmine for treating myasthenia gravis because option A, it is better absorbed orally. Option B, it has longer duration of action. Option C, it has additional direct agonistic action on nicotinic receptors at the muscle and plate. Option D, it penetrates blood-brain barrier. It penetrates blood-brain barrier. मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ दोस्तों. neostigmine is preferred over physostigmine for treating myasthenia gravis because. ऑप्शन देखिए दोस्तों. आपको कौन सही लग रहा है इससे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी. इट हैज़ एडिशनल डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्शन ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स एट द मसल एंड प्लेट. मसल एंड प्लेट. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द mechanisms by which neostigmine improves contractions by myasthenic muscle involves. Option A, repetitive binding of the acetylcholine molecules to the same receptors at the muscle and plate. Option B, diffusions of acetylcholine released from motor nerve endings to a wider area activating neighboring receptors. Option C, activation of motor and plate receptors by neostigmine molecules themselves. Option D, all the above. तो इसका आंसर है ऑल द एबव. ऑप्शन डी, ऑल द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. Pyridostigmine differs from neostigmine in that. Option A, it is more potent orally. Option B, it is longer acting. Option C, it produces less muscarinic side effects. Option D, it does not have any direct action on NM receptors. तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग. इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग. ऑप्शन बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, edrophonium is more suitable for differentiating myasthenic crisis from cholinergic crisis because of its option A shorter duration of action, option B longer duration of action, option C direct action on muscle and plate, option D selective inhibition of true cholinesterase. तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी का क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप आज किए गए सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें और कल के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। थैंक यू।